See students, am equal to a1 plus a2 a3 so on to an by n. This am can also be written as summation ai I equal to 1 to n divided by n. Summation I equal to 1 to n divided by n. This is again the same. We can write it like a1, a2, a3 so on to an by n and summation I equal to 1 to n by n. So this is what the absolute error. Since true value is not known, true value is not known, therefore we will take am as a true value. Well students, suppose we have to design a t-shirt. सभी बच्चे कैमरा ऑन करो, कोमल, प्रज्ञा, सभी लोग कैमरा ऑन करो, कैमरा मत स्विच ऑफ करो, चेतना तुम भी कैमरा ऑन करो. It is very irritating to teach a student whose camera is off. For example, we have to design a t-shirt. Say, Benetton wants to design a t-shirt. And what Benetton will do, Benetton will go to the different people, that very age group who wears t-shirts, and they take, they take readings, measurements, chest itna, length itna, and so on. Suppose they take 100 different people measurements. Then A1, A2, so on to 100 divided by 100. That size they will stitch. वो वाला साइज वो क्या है, स्टिच करेगा, एंड दैट विल बी रिलीज टू द स्टोर. इसको बोल देंगे मीडियम. फिर कुछ मोटे मोटे लोगों को ले लेंगे, थोड़े कम मोटे, लार्ज. फिर बहुत ही मोटे मोटे लोगों को ले लेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज. तो यही साइज आते हैं ना, मीडियम, एल लार्ज, एक्स एल एक्स्ट्रा लार्ज. और बहुत ही मोटे होते हैं तो डबल एक्सएल. I hope you are all aware of this. So what is that measurement that is near to the true value? Hope it is clear. Students, focus. Yes, sir. Hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. I think now I am trying to make it a bit interesting by quoting an example of t-shirts. Yes, So like we take reading 1, reading 2, reading 3 and divided by that is called what? The average value. Now students, we move further. The magnitude of the deviation of the result of any measurement of the quantity from the arithmetic mean is called absolute error. What is absolute error? Let me tell you. एक्चुअली शिमला में आज ठंड बहुत ज़्यादा है. इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड
It's temperature is low, but we have to carry on. Delta A1. What is delta A1? Delta A1 is called what? Absolute error. That is equal to AM minus A1. Delta A1 is equal to what? AM minus A1. Delta A2, that is AM minus A2. Delta A3, AM minus A3, so on. Delta AN, AM minus AN. तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, so on to delta AN, these are all called absolute error. कोई शक, कोई सवाल? No, sir. Any questions, students? Sir, can you please repeat the definition? Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताता हूं. एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, हम लोग रीडिंग्स लेते हैं बहुत ज्यादा, फिर उसका एवरेज निकालते हैं. तो सिंपल एक मैथ्स का फंडा है कि हमने n रीडिंग्स ली, उसको n से डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड AM. दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू. दिस इज नियर टू व्हाट? True value. If you are not aware of true value, na, if you don't have true value with you, how can you move near to the true value? You can move to the near to the true value by taking number of readings, and then you people take the mean of that. Makes sense? Is it clear? Yes, sir. क्या ये समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Is it clear all? Yes, sir. जो बच्चे ने आज ही ज्वाइन किया उससे पूछता हूं, स्वालन की, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. डरते तो नहीं ना आप? हाँ, वेरी गुड. सो उसके बाद हमने करना क्या है? उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं करना, हम लोग सिंपली एब्सोल्यूट एरर को डिटरमिन करेंगे. किसको डिटरमिन करेंगे? किसको डिटरमिन करेंगे? Absolute error. यस. तो एब्सोल्यूट एरर कैसे डिटरमिन करेंगे? हम लोग ट्रू वैल्यू के पास जाएंगे एंड ट्रू वैल्यू में से रीडिंग नंबर 1 को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिला? डेल्टा A1. डेल्टा A1 कौन है? एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा A1 कौन है? एब्सोल्यूट एरर. फिर हम डेल्टा A2 के पास जाएंगे, तो AM माइनस A2, AM माइनस A3, AM माइनस AN. कोई शक, कोई सवाल? हाँ, सर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन, क्या बोला? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन of the result of any measurement of the quantity from the arithmetic mean is called
the absolute error of the measurement. Now, true value, nearly true value is what? Bolo. AM. And what is absolute first error? AM M minus. minus A1. And second, delta E2 is? AM A minus. minus A2. Yes. And students, this is how you people can calculate the absolute errors. कोई शक कोई सवाल? Is it all clear? Yes, sir. Now, I am going to explain you mean absolute errors. What? Mean absolute error. Perhaps you are doing it first time with a teacher, all this. So what is our headline? Mean? Absolute error. Yes. As the name suggests, mean absolute error. As the name suggests, mean absolute error. According to you, what it should be like? Mean absolute error mean absolute error, according to you, what it should be like? Yes, delta A mean is equal to delta A1 plus delta A2 and so on delta AN. अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता हो ना तो फिर डेल्टा A3 then delta A4 then delta A5 पूरा 3 hours you can go to delta A1080, right? Otherwise delta A1 plus delta A2 so on to delta AN divided by N. Make sense? Yes, sir. This is called what? This is called mean absolute error or delta A mean is also called final absolute error. It is also called final absolute error. Now students, what will be the final result of the measurement? Final result of the measurement ये क्या आएगा? It will be A equal to AM plus minus delta AM. It means AM minus delta AM is less than equal to A, is less than equal to A is less than equal to AM plus delta AM. So
this shows that any single measurement of the quantity A, either it will be AM minus delta AM or it will be AM plus delta AM. मान लीजिए अगर एरर नेगेटिव आ रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, अगर एरर पॉजिटिव आ रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. This is what, students, this is what we have mean absolute error. Mean absolute error is what? It is the arithmetic mean. It is the arithmetic mean of all the absolute errors. This is the arithmetic mean of all the absolute errors, which is delta A1 plus delta A2 so on to delta AN divided by N. Then students, delta A mean is what? Final absolute error. Final result of the measurement is AM plus minus delta AM. And it means AM minus delta AM is less than equal to A, or it is less than equal to AM plus delta AM. Even you can write this result as like this also: summation delta AI I equal to 1 to n divided by whole n. So इसको इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी इसका एक वे है टू रिप्रेजेंट. होप इट इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. देखो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. It is not involving any physics phenomena, like we are not using any kinematics or dynamics, right? We are learning something in physics particularly. This chapter has of a great importance for the JEE Advanced. But for the board level, generally you may be asked, what is Gaussian's law of distribution of errors? What is absolute errors? What is mean absolute errors? And what will be the final result? That will be AM minus delta AM less than equal to A, and this is less than equal to AM plus delta AM. So this makes you people crystal clear what I have explained. जो मैंने बताया वो आपको समझ आया? Well students, let me tell you one thing. Teaching is the transmind of the concept. So first of all, when you want to learn, sit with a confidence, yes, I am going to understand. Second thing, when you are learning subject from a teacher, then you match with his way of learning, and if it matches your way of understanding, you will click with that teacher. All teachers are very good, all students are very, very good, but the combination of good teacher and good student makes jolly good. So that we have, Devansh. So students, ये बहुत important है जो मैंने आपको बताया है. Hope it is crystal clear. अगर किसी के बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? देवांश, इज इट क्लियर? Yes, sir. अंकुश? Yes. कृति? चेतना? प्रज्ञा? Yes, sir.
Pragya, you are learning from Hills to Bhopal, you know. So it's an honor for us to teach the students from anywhere from the corner of the country. So we have a mission to give the quality coaching on the online, because online has an advantage that I can reach anywhere, any corner of the world, and hope you feel comfortable what I am explaining. Yes, sir. Okay. Ankush Dikshit Tanwar, is it clear? Yes, sir. Shreya, Yes, sir. Mr. Krish. Yes, sir. Now students, I'm going to explain you a relative error. What? A relative error or the percentage error. Write down. Relative error. Actually, this chapter is basically, we people haven't done in the initial months, and but करना तो है ही. अब ये थोड़ी होता है कि ये चीज़ हमें बोरिंग लगती है तो हमने नहीं करनी तो है ही. तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है दैट आप इसको अच्छे से समझो. And for your convenience, this is recorded as well. I will upload also. But वो एक रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा है YouTube पे. बट अगर समझना है वो तो फिर लाइव आप समझ रहे हो तो उसमें डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कीजिएगा. मुझे एक चीज़ बताइए, ऑफलाइन में भी तो ऐसे ही है. आपको मैं यहाँ तो बल्कि रादर मैं सभी को फोकस कर पा रहा हूँ. ऑफलाइन में भी तो ऐसे ही है. टीचर आपके सामने खड़ा है, वो पढ़ा रहा है बोर्ड के ऊपर, आप बैठे हो. बोलो, इज इट राइट? Yes, sir. And moreover you are sitting at your own comfort, at your own place, right? I rather welcome your parents also to join us. Right on. Relative error or the percentage error. मतलब जिस बच्चे ने सीखना है ना जी, उसके पास एक्सक्यूज नहीं होता, और जिसने कुछ सीखना नहीं है उसके पास एक्सक्यूज होता है. और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मेरा कोट मेरे को बहुत पसंद है. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेल्यूर इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज. The explanation of a failure is always an excuse. Agree? तो आपको it's your fundamental right to ask questions and put any question, any query. What is relative error or the percentage error? The accuracy of the measuring physical quantities. लिख लो भाई. The accuracy of measuring physical quantities in compared by calculating the relative error or the percentage error. Relative error is the ratio of mean absolute error. Relative error or percentage error is equal to mean is equal to the ratio of mean absolute error. What is mean absolute error? Right now I have calculated delta A mean divided by AM. So students, what is AM students? True value, nearly true value. So if you divide delta A mean divided by AM, you will get a relative error.
हाउ वी कैन एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज? बहुत सिंपल है. परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन divided by AM into 100. Is it clear, students? Any questions, students? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now I am progressing towards the concept of what? Combination or propagation of errors. Headline: combination or propagation of errors. Combination or propagation of errors. Combination or propagation of errors. First of all, error in a sum or difference. Errors in sum or difference. See, measured value of A. Measured value of A. That is what? That is equal to A plus minus delta A. Which law it is? Gaussian's law of distribution. Measured value of B. That is B plus minus delta V. Let Z denote sum of A and B. Let Z denote sum of A and B, and delta Z क्या होगा? Corresponding बाहर से absolute error. Right? So clearly Z is equal to A plus B. Yes. तो Z plus minus delta Z, A plus minus delta A, B plus minus delta B. Yes, sir. I think Shreya, somebody from Bilaspur again joined, I think, on your behalf. Anybody just named B Bilaspur? May I know who is? Okay, it's the same. Pragya Salanki, welcome back. सभी बच्चे बोर तो नहीं हो रहे यार? मुझे पता ही है टॉपिक बोर है. अब मैं यहाँ कटरीना को तो बुला नहीं सकता कि डांस करके दिखा दे भाई इसको, ठीक है ना? तो अब करना तो पड़ेगा यार. दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. चैप्टर है अगर बोर तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना. तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z, A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B.
भाई जी a प्लस बी किसके बराबर है? वेरी गुड. सो z प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस गेट्स कैंसल. तो डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सर मेरा आ जाएगा. हमारा कैमरे को हम नीचे कर देते तो आ जाएगा. लो, इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है? अरे यार, ये कैमरा भी बड़ा ढीठ है. हो गया? Yes, sir. अरे आप लोग दुखी तो नहीं हो रहे लेट नाइट क्लास लगा के? बल्कि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा. वेले बैठे हैं सारे घर में, नहीं तो व्हाट्सएप पे फंसे होते, है ना? व्हाट्सएप पे चल रहा था, हेलो कैसे, बढ़िया हो, ये वो. आई एम यूजिंग योर टाइम रादर फॉर मोर यूजफुली. So students, the maximum error in Z is what? Plus minus delta A plus delta Delta B. So what is maximum error in delta Z? Maximum error. तो डेल्टा Z is equal to डेल्टा A प्लस डेल्टा B. डेल्टा A प्लस डेल्टा B, that is the maximum error. अब स्टूडेंट्स, इन केस अगर ये ZA माइनस B डिनोट करता तो भी रिजल्ट यही आता. Interesting. Yes, sir. Should I prove it? देखो, Z is equal to A minus B. Z plus minus delta Z, A plus minus delta A, minus B plus minus delta B. Z plus minus delta Z, A minus B plus minus delta A common, delta A plus delta B. What is A minus B, students? Z. Yep. So this is delta A plus delta B. This gets cancelled. The delta Z plus minus delta A plus delta B. So delta Z is equal to plus minus delta A plus delta B. How's it, students? सम में भी वही एरर है, डिफरेंस में भी वही एरर निकल के आ रहा है. कैमरा थोड़ा साइड करते हैं. इस कैमरे को भी साइड करते हैं, रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, फिक्र ना करो. ये लो, और मेरा मार्कर भी रो रहा है. अब 1 मिनट खड़ जाओ यार. आप आए इतने थे खोर कैमरा है, आप बेचारा वेला आदमी इन परे करिए. चल भी कैमरा, तू इधर नु हो जा. ओ हो जा भरा. इसको पैरालिसिस हो गया लगता है. No, it's okay. Any question? So students, errors in sum or difference I have completed.
Now I'm going to teach you errors in a product or quotient. Errors in a product or quotient. Should we do today or should we do tomorrow? Let it be done tomorrow.